Hello everyone, welcome to PT 79 Plus series for reading filling the blanks number 12. It means that we have already discussed 11 highly repetitive and predicted filling the blanks जिनके chances आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा high हैं and you can also score your target score चाहे वो आपका 79 plus हो and you can see the link in the description for the playlist and you can watch all the previous videos. This is a special series which is started on demand by our students. We have students all over the world जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दे टोल्ड कि सर आपने स्पीकिंग की स्ट्रैटेजीज के साथ आपने स्पीकिंग में हमारे 79 प्लस आ रहे हैं, राइटिंग में 79 प्लस आ जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, लिसनिंग में भी आ जाते हैं, कुछ करिए कि आप रीडिंग की भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाइए जिससे हमारे रीडिंग में भी 79 प्लस आ जाएं. सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड द सीरीज. माय नेम इज भरत ब्रिज and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. Now question what students ask is sir ये कैसे किया, how, क्या हम भी कर सकते हैं? The answer is big yes. It is just based on two things. Which two things? The number one thing is artificial intelligence part software practice. Second thing is strategies, and our software Marvel PT's software is powered by artificial intelligence and the same technology Pearson also uses. So that's why it's very important कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे उसी टेक्नोलॉजी पे प्रैक्टिस करिए, उसी ढंग से प्रैक्टिस करिए एंड स्ट्रैटेजीज के साथ प्रैक्टिस करिए. ऑलवेज रिमेंबर पीटी इज मार्क्ड बाय अ बॉट और अ रोबोट एंड हम क्या मिस्टेक करते हैं वी प्रिपेयर एज पर ह्यूमंस, हमें कभी नहीं करना है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Before getting started, a lot of congratulations to students who have achieved their target score in this week, and you can see their results in the ticker. And coming to the PT reading, integrated timer होता है 32 to 41 minutes का, which means that time management आपको खुद करनी होती है और बहुत सारे student इसी कारण से score नहीं कर पाते because they are not able to manage their time well. And then another misinformation is that reading module. Yes, this pronunciation is module not module. Okay, हमें अपनी pronunciation भी improve करनी है, चाहे आपका target 58 plus हो, 65 plus हो या 79 plus हो, आपको अपनी pronunciations भी improve करनी है. So it will be module and there are 5 question types. Their order is fixed. This is the best thing. सबसे पहले reading and writing filling the blanks आएंगे, then multiple choice multiple answers आएंगे, reorder paragraphs आएंगे, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स आएंगे. दिस इज द रियल पीटी स्कोरिंग. अगर आप ध्यान से टोटल करेंगे तो इन क्वेश्चंस का टोटल जो रीडिंग के हैं वो 47 48 बनता है. सो रीडिंग इज जस्ट 50%. तो आपके 50% मार्क्स कहाँ से आते हैं? 50% मार्क्स आते हैं आपके रीड अलाउड स्पीकिंग से, समराइज रिटन टेक्स्ट से, और 11 मार्क्स तक आपके आते हैं लिसनिंग से. अब स्टूडेंट्स नंबर 1 मिस्टेक क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं रीडिंग मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स पे जस्ट 1 मार्क के हैं एंड रीडिंग मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स जस्ट 3 मार्क्स के हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमने बिग डेटा एनालिसिस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस से ये फाइंड आउट किया कि अगर आप ये क्वेश्चंस दोनों अटेम्प्ट नहीं करते तब भी आप 79 प्लस स्कोर कर सकते हो, बिकॉज जो आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स हैं 22 मार्क्स के हैं, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स 15 मार्क्स के हैं, रीऑर्डर पैराग्राफ 6 मार्क्स के हैं. तो ये याद जरूरी हैं. एंड एज आई सेड हमने बिग डेटा एनालिसिस किया बेस्ड ऑन आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस. वी हैव फाउंड आउट दैट हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड. यू कैन स्पेंड जस्ट 2 to 2.5 minutes. एंड उसमें भी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो सारे वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, विच इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू डू स्किमिंग. And all those students who take our online coaching or from our institute get to know how to do the skimming. And then reading strategies, reading crack करने के लिए strategies हैं. There is a slow method. Slow method में you have to do it yourself. Then you have to identify your own mistakes. You have to do research. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है, then क्यों गलत है, why, and then you have to teach yourself. And all this is going to take time. That's why you move at snail's pace. But there is a fast method. Fast method क्या है? The pronunciation for this is fast, not fast. Fast method है कि आपके scores rocket की बूस्टर की तरह बूस्ट कर दिए जाएं और आप अपना टारगेट स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर लें, चाहे आपके 79 प्लस है टारगेट स्कोर या 65 प्लस है या 58 प्लस है. एंड व्हाट इज दैट फास्ट मेथड? टू फॉलो अ सिस्टम विच आइडेंटिफाई योर मिस्टेक. हमारा सिस्टम मार्वल पीटी का सिस्टम आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करता है एंड देन लर्न फ्रॉम अ स्पेशली डिजाइन कोर्स. वी हैव अ स्पेशली डिजाइन कोर्स बेस्ड ऑन योर टारगेट स्कोर. 79 है तो कोर्स अलग होगा, 65 है तो अलग है, 58 प्लस है तो अलग है.
and have your progress checked. It's very important. Our R software, which is powered by artificial intelligence, helps you to check your progress. So what is our reading filling the blank strategy? We have three main strategy. Number one is context. Number two is lexical resource. Number three is grammar. Context में you have to pay attention to skimming, forward reading and backward reading, as well as tone कि positive tone है, negative tone है, neutral tone है. Lexical resource में you have to pay attention to collocations, phrasal verbs, vocab, and grammar में tenses, parts of speech, parallelism, active passive, prepositions, subject verb agreement. All this is taught to our elite students जो हमारे online members हैं, and those are elite students. Free of cost है हमारा grammar course उन students के लिए, because you cannot crack your reading without grammar, and grammar is very important. Today we are going to see that. So reading modes, there are two modes in our software. One is exam mode and second is time mode. जब exam mode off है, you can practice everything. जैसे ही आप exam mode on करते हो तो आपको वही questions दिखते हैं which are highly predicted and coming in an exam. What does that mean? It means simply that you have to simply cram it. अगर आप cram कर लोगे, रट्टा मार लोगे और अगर वही questions आपके पेपर में आ गए तो obviously आपके marks boost होंगे. And second important mode is time mode, because remember आपको time management खुद करनी होती है PT में. अब मैंने आपको बता दिया you have to spend 2 to 2.5 minutes, but practice कैसे करोगे? So what you are going to do, starting में जब आप strategies समझ रहे हो, you are not used to the system, आप time mode off रख सकते हो. So you can attempt your question even in 3 minutes, 4 minutes and 5 minutes. But once you have hang of the things or you are near your exam, so time mode on करिए. You will be able to see a timer on our software कि आप उसी time में practice करेंगे and after 2 minutes अपने आप ही answer auto submit हो जाएगा, so that you know कि क्या pressure है, कितनी जल्दी आपको quickly solve करने हैं reading filling the blanks. This is our today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds and your time starts now. Okay, I'm back. So gunpowder, also referred to as black powder, was the only something chemical explosive until the mid 19th century. And always remember PT में जितने blanks होंगे आपके जो options होते हैं +3 होते हैं. So अगर आपके पास blank हैं 1, 2, 3, 4, राइट इसको 4 नहीं कहना है. द प्रोनाउंसिएशन इज 4. और हमारे elite members को we teach them an exhaustive pronunciation course which is free. So when our online members take elite membership, उनको pronunciation course भी मिलता है and you have to score in pronunciation also. So let's see the number of blanks you have got. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See? +3 are always extra. अब आपको फिल कैसे करना है? सबसे पहले आप ये देखिए टेंसेस. रिमेंबर हमने ग्रामर की बात की थी, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? सबसे पहला क्लू आपके पास है कि यहाँ पे पास्ट टेंस, पास्ट नहीं बोलना है इसको. दिस इज पास्ट टेंस. सबसे पहला आपके पास क्लू है कि आपको पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है. सो अब हम क्या करेंगे? सेकंड स्ट्रैटेजी जो हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताते हैं कि पहले आपने रीड आउट करके फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा टेंस है, उसके बाद देन यू कैन डू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड देन अलोंग विद दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच. वी विल सी हाउ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज. We have 2 to 3 lectures in our grammar course on just part of speech. I will tell you about our grammar course in due course. So यहाँ पे was the only something chemical explosive until the mid 19th century. Again prove हो गया कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? past tense की. तो अब सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, right? past tense की फॉर्म आएगी, right? तो अब यहाँ पे includes past tense है, नहीं है, हम वैसे ही eliminate कर देते हैं. contains past tense है, नहीं है, we can eliminate that. cause past tense है, yes है. academic ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस नहीं है, यू आर नॉट श्योर कि ये कौन सा टेंस है. नोन, राइट? नोन इज अगेन पास्ट टेंस. तो अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? आपके पास कॉज्ड है, आपके पास नोन है. यूनिक क्या पास्ट टेंस है? नहीं है. और उसके बाद है आपके पास लेड. अब आपको पता है आपको यहाँ पे फिल करना है, पास्ट टेंस में फिल करना है, तो अब आप क्या फिल कर सकते हैं?
वॉज द ओनली कॉज्ड केमिकल एक्सप्लोजिव, नहीं फिट बैठ का कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा, तो उसको भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। देन वॉज द ओनली लेड केमिकल एक्सप्लोजिव, लेड क्या होता है जब हम किसी चीज को लीड करते हैं, लेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ लीड। सो यहाँ पे अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप देखिए, चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, सिर्फ हमने क्या अप्लाई किया, अपने बेसिक ग्रामर रूल्स अप्लाई किए जिसमें हमने टेंस देखा प्लस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन विद आवर स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे अब आप क्या फिलअप करेंगे, वॉज द ओनली नोन केमिकल एक्सप्लोजिव, दैट्स इट। अब आपने यहाँ पे नोन को फिल कर दिया। फिल कैसे करते हैं, यू हैव टू सिंपली ड्रैग दिस एंड यू हैव टू ड्रॉप इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट समथिंग potassium, this is not potassium, we have to improve our pronunciations also, always remember. So this is potassium, calcium हम कैल्शियम कहते हैं, एंड देन वी से कि सर हमारे प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स नहीं आ रहे, दैट्स व्हाई वी हैव दैट प्रोनाउंसिएशन कोर्स व्हिच वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स, जिसमें देयर आर अराउंड 25 to 30 lectures and we tell you about pronunciation in detail so that you can also score 90 plus. Always remember, PT simply checks for your pronunciation, they do not check for your accent, and accent and pronunciation are different things. So यहाँ पे it something potassium nitrate or saltpeter which is an oxidizer and a combination of charcoal and sulfur serves as a fuel. तो अब आप ये बताइए, अब ध्यान से देखिए, ये आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या past tense यूज होगा, शायद नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसका इंग्रेडिएंट्स बता रहा है, राइट, या फॉर्मुलेशन बता रहा है कि आपका जो गन पाउडर है या ब्लैक पाउडर है उसकी क्या फॉर्मेशन थी। सो अब किस में होगा, ये हमारे ग्रामर रूल्स हैं विच वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स। जब भी आप जनरल फैक्ट या ट्रूथ के बारे में बात करते हो तो कौन से टेंस में बात करोगे, हमेशा प्रेजेंट टेंस में। सो यू नो, इफ यू नो दोज रूल्स यू कैन क्विकली अप्लाई। अब आप देखिए कौन से इसमें प्रेजेंट टेंस में है, इंक्लूड्स है, कंटेन्स है, कॉज्ड नहीं है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज आवर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एकेडमिक एडजेक्टिव है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यूनिक क्या है, एडजेक्टिव है। लेड क्या है, पास्ट टेंस है। वर्ब है, दिस इज ऑल्सो वर्ब। सो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंक्लूड्स आएगा या कंटेन्स आएगा। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज में वो चीज मिलाते हो, बट नहीं, यहाँ पे तो आप उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बता रहे हो, या कैसे वो फॉर्मुलेट होता है, कैसे बनाया जाता है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कंटेन्स, राइट। देयर इट contains, तो यहाँ पे क्या बात होगी, it contains potassium nitrate. Okay, so what we are going is we are going to fill contains. Moving on to next one, there is a consensus. अब आपको पता है consensus है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक adjective आएगा। अब remember हमने parts of speech में वैसे ही देखा था, what is this, this is verb, this is verb, right, verb की present form, verb की past form, ये दोनों हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स। तो अब हमने नैरो डाउन कर लिया, या तो यहाँ पे एकेडमिक आएगा या यूनिक आएगा। अब कंसेंसस कभी यूनिक हो सकती है, नहीं होती है। और सेकंड थिंग, एकेडमिक कंसेंसस इज अ कॉलोकेशन। रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉलोकेशंस। एंड यहाँ पे क्या आएगा, आपका यूनिक नहीं आएगा, अगेन बिकॉज यूनिक क्या होता है, एकदम निराली, बट कंसेंसस क्या होता है, एक तरह से सबकी राय, एकजुट राय, राइट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या सोचते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, एकेडमिक कंसेंसस। दैट गन पाउडर वॉज इनिशियली इन्वेंटेड इन चाइना एज अर्ली एज द 9th century. This something to its use in fireworks and gunpowder weapons. Remember, यहाँ पे कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे इंक्लूड्स आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, यूनिक आपको पता है, एडजेक्टिव है। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, कॉज्ड और लेड। अब लेड क्या होता है, उस चीज का जरिया बनना, यू कैन से लाइक दिस। कॉज क्या होता है, उसका रीजन या कारण। अब दिस कॉज्ड टू इट्स यूज, टू साथ में लगा हुआ है, कॉज टू तो वैसे ही नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, दिस लेड टू। ये जो हम बात कर रहे हैं गन पाउडर की, एंड जो 9th century में इवॉल्व हुआ है, जो कॉम्बिनेशन है चारकोल एंड सल्फर का, ये चीजें इट्स लेड इट्स यूज इनटू फायरवर्क्स एंड गन पाउडर weapons. Past tense में बात हो रही है, so that's why it will be lead. And let's see if the answers are correct. As you see, the answers are correct. So there is explanation also, because यहाँ पे known क्यों आ रहा है, past tense adjective चाहिए आपको, contains क्यों आ रहा है, बिकॉज कंटेंट्स डिस्क्राइब कर रहा है, एकेडमिक क्यों आ रहा है, कॉलोकेशन है, लेट क्यों आ रहा है, पास्ट टेंस की बात है, वर्ब और कैजुअल रिलेशनशिप है, और साथ में टू के साथ यूज हो रहा है। कॉज टू नहीं होता, लेट टू होता है। दिस लेट टू हिज डाउनफॉल, हम ऐसे ही कहते हैं ना, दिस लेट टू हिज डाउनफॉल,
right? So इसीलिए let के साथ क्या आएगी, you may consider this as phrasal verb, so it will be let to. And what our grammar course has, as I said, we have 25 to 30 lectures on our grammar course. Parts of speech के there are 2 to 3 lectures, subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs, British English rule sentences. So we teach them free of cost. Grammar is included when you are elite members or when you take coaching from our institute, and you see कितना grammar important है reading filling the blanks को solve करने के लिए. In our software you can see the attempts also, previous attempts, past attempts. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो questions आपके correct हैं उनको correct बताया हुआ है, जो partially correct हैं, so it means that आपको वो revise करने चाहिए and you can skip your correct ones क्योंकि आप उनको सही ढंग से attempt कर रहे हैं. अब रिवाइज कैसे करेंगे, यू कैन सी दिस बटन ओवर हियर, शो मी पे क्लिक करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे और पता चल जाएगा आपने कौन सा गलत आंसर लिखा है, क्या राइट आंसर था. जो राइट है वो सिर्फ टिक मार्क्ड होंगे, जो रॉन्ग होंगे वो आपके रेड मार्क होंगे. Always remember you have 2 to 2.5 minutes to attempt it. In first 30 to 60 seconds आपने skim करना content, and then in remaining 90 to 120 seconds you have to look for clues, you have to find pointers. जैसे आज हमने past tense की बात की, parts of speech से हमने solve किया, and then process of elimination. This is our friend. And when it comes to cracking PT, you have to trust a system or professional. And this is the scenario. You are standing almost at the top of the cliff, and this is that system or professional. And you are trusting them. अगर वो सही सिस्टम या प्रोफेशनल है, you will be at the top, but नहीं है, you will fall down. Fall down means आपको दोबारा से PT re-attempt करनी पड़ेगी. We do not want this. All our strategies are validated and proven. Proof क्या है? You can see the scores in the ticker, and I have also scored. So many students have scored their target scores. And consider Marvel PT as the center of the universe. First you have to understand the concepts, then you have to learn those concepts. फिर आप उन concepts को implement करेंगे and perfect करेंगे. Perfect कैसे कर सकते हैं? Feedback के साथ. Feedback is very important, and we provide correction and feedback service to our online subscribers. Complete speaking. Me and my team tell you the mistakes you are making in read aloud, repeat sentence, describe image, retell lectures, so that you can apply our strategies and achieve your scores. So complete speaking, complete writing में summarize written text, write essay, and listening में summarize spoken text. So we will tell you what mistakes you are making and how to improve them so that you can achieve your target score, चाहे वो 79 plus हो, 65 plus हो या 58 plus हो. And always remember, this is a trophy. What is this trophy? Your target score 79 plus, 65 plus or 58 plus, and you have to achieve it in first attempt. But if you are not following or modifying our strategies, you will not be able to achieve. But if you are following our strategies, you will be able to achieve your target score. And learning a language is like going to the gym. The brain needs exercise. Your brain needs regular exercise and repetitive exercise for it to develop. And practice is the key. जितनी practice करोगे उतनी improvement होगी. Along with practice, evaluation and monitoring are important. So that's why we have sent for evaluation or correction service. This is our WhatsApp number 8699121121. You can contact us for online coaching or if you have any doubts or questions. And do not forget to subscribe to our channel because we upload such informative videos on a daily basis. We give wings to your dreams.